Welcome to my channel. So today again I come back with 10 MCQs on All for Love. It is written by जॉन ड्राइडेंस और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में, इसलिए मैं ये सिलेक्ट करके लाई हूँ। 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस विथ आंसर्स। सो हु इज़ द central protagonist in John Dryden's All for Love? Alexander the Great, Mark Antony, Julius Caesar, Cleopatra. So your answer is Mark Antony. Who is the primary theme? What is the primary theme of Dryden's All for Love? So what are the options? Political ambition, duty versus passion, friendship and betrayal, religious redemption. So your answer is duty versus passion. So what is the main source of conflict in All for Love? So option, the rivalry between Caesar and Antony, Caesar and Antony, Cleopatra's desire to marry Caesar, Antony's internal struggle between love for Cleopatra and his duty to Rome, Cleopatra's pursuit of power over Egypt. So actually this All for Love, it brought from शेक्सपियर, एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, उसके ऊपर बेस ही हैं मोस्टली। तो आप अगर शेक्सपियर के एंटोनी एंड क्लियोपाट्रा, इफ यू हैव रेड देन यू कैन अंडरस्टैंड इट बेटर। सो यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है मार्क एंटोनी के अंदर, वो है एंटोनीज इंटरनल स्ट्रगल बिटवीन लव फॉर क्लियोपाट्रा एंड हिज ड्यूटी टू रोम। Next one, how does Dryden depict Mark Antony's character in All for Love? So as a ruthless leader, as a noble but tragic hero, as a cunning politician, as a weak and indecisive ruler. So actually वो एक नॉबल है बट ट्रैजिक हीरो है, एज ए नॉबल बट ट्रैजिक हीरो. Which historical event forms the backdrop of All for Love? Battle of Actium, the fall of Rome Empire, Julius Caesar's assassination, the conquest of Gaul. So actually this question already asked in NTA NET. तो ये तो NTA NET का फेवरेट मतलब ट्रैजिक ट्रेजेडी है, जो कि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, और ये क्वेश्चन स्पेशली दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैव आस्क्ड, सो बी प्रिपेयर फॉर दैट. सो दिस इज द बैटल ऑफ एक्टियम. विच कैरेक्टर इन ऑल फॉर लव सर्व्स एज ए कॉन्फिडेंट to Mark Antony, urging him to return to home? So Cleopatra, Charmian, Ventidius and Octavia. So your answer is Ventidius. So किसके लिए वो मतलब रोम आना चाहता था, वो है Ventidius. How does Dryden's portrayal of Cleopatra in All for Love differ from her usual representation in literature? So she is मतलब क्लियोपाट्रा को कैसे पोर्ट्रेल किया गया है. सी इज शोन एज ए कोल्ड एंड कैलकुलेटिंग पॉलिटिकल फिगर. सी इज depicted as embodiment of pure evil. She is portrayed as completely loyal to Antony. So your answer is she is depicted as a tragic, self-sacrificing lover. So she is depicted as a tragic but self-sacrificing for lover. तो अपने लवर के लिए वो सेल्फ को सेक्रीफाइस की है. What role does the character of Octavia play in the play? A lover of Antony, a political rival to Cleopatra, Antony's wife who symbolizes duty and virtue, a scheming manipulator of Antony. So your answer is Antony's wife who symbolizes duty and virtue, Octavia. सो ऑक्टाविया भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं उसमें.
What does Mark Antony ultimately decide regarding his loyalty to Rome in All for Love? सो ऑल फॉर लव में एंटोनी का रोम के साथ क्या लॉयल्टी था. ही चूजेस टू अबैंडन क्लियोपाट्रा and return to Rome. He decides to follow Cleopatra and fight against Rome. He seeks a peaceful resolution with both Cleopatra and Rome. He decides to commit suicide rather than choose between love and duty. So finally क्या होता है, वो डिसाइड करता है सुसाइड कमिट करने के लिए. मतलब वो चूज नहीं कर पा रहा था कि किसको चुनेगा वो, love या duty. So he decides to commit suicide rather than choose between love and duty. In All for Love, what is the tragic irony in Mark Antony's actions? So he wins the Battle of Actium but loses Cleopatra. He kills Caesar, which leads to the downfall of his own empire. He sacrifices his life for love but fails to achieve his goals. He betrays Cleopatra for political gain but ultimately dies alone. So he sacrifices his life for love but fails to achieve his goal. अपने लव के लिए वो अपना लाइफ को क्या करता है, सेक्रीफाइस कर लेता है, लेकिन जो गोल था उसको वो अचीव नहीं कर पा रहा है. तो ये था ऑल फॉर लव का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए मे बी यू में